हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पूर्व वीडियो रे हमें सीपीटी सिलेबस रो कोर 1 यूनिट 1 रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करथिले। आज रो वीडियो रे हमें से कोर 1 रो यूनिट 2 रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। जदि पूर्व वीडियो देखि नांदे ताले जाकि सेटा देखि नंदु। तो चलो तो स्टार्ट करबा आज रो वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन अछि, व्हाट इज फिलोसफी? Option is a science that studies the natural world, a study of human behavior and society, a systematic inquiry into the nature of reality and knowledge, a form of artistic expression. Our answer of option number C, a systematic inquiry into the nature of reality and knowledge. तापर 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा, which of the following is a key characteristics of philosophical? Option is it seeks to provide definitive answers to questions. It involves the use of empirical evidence and data. It encourages critical thinking and skepticism. It is limited to the study of human behavior. Our answer of option number C, it encourages critical thinking and skepticism. 3 number question देखिबा, what is the primary goal of philosophy? Option is to develop a set of rigid doctrines and dogmas. Option B is to provide a comprehensive explanation of the natural world. Option C is to cultivate wisdom and understanding through critical reflection. Option D is to promote a particular ideology and agenda. Our answer of option number C, to cultivate wisdom and understanding through critical reflection. 4 number question देखिबा, which of the following branches of philosophy deals with questions about existence and reality? Option is epistemology, ethics, metaphysics or logic. Our answer of option number C, metaphysics. Metaphysics टा जोटा अछि सेटा existence और reality ऊपर क्वेश्चन करथाय। 5 नंबर क्वेश्चन देखिबा, who is considered the father of western philosophy? Option is Socrates, Plato, Aristotle, Immanuel Kant. Our answer of option number A, Socrates. Western philosophy रो father होचंदी Socrates. 6 number question, what is the etymology of the word philosophy? Option अछि it comes from Greek word philos जार माने होची love और sophia जार माने होची wisdom. Option B रे अछि it comes from the Latin word philos and sophia. Option C रे अछि it comes from the French word philos and sophia. मेनली उडा सब फिलोस और सोफिया अछि किंतु एई वर्ड उडा माने को फिलोसफी टा को रूट वर्ड रो आछि, ग्रीक वर्ड ना लैटिन वर्ड ना फ्रेंच वर्ड ना जर्मन वर्ड. तो आर आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिलोस एंड सोफोस. तो फिलोसफी जो वर्ड टा अछि सेटा ग्रीक वर्ड रो आछि. ग्रीक रो दीटा वर्ड रो आछि फिलोस और सोफिया. फिलोस माने होची लव और सोफिया माने होची विजडम. सेतपय फिलोसफी को कहै छै लव ऑफ विजडम. 7 number question, which of the following definitions of philosophy is most accurate? Option A, philosophy is the study of natural world. Option B, philosophy is the study of human behavior and society. Option C, philosophy is the systematic study of fundamental questions about existence, knowledge and values. Option D, philosophy is the study of art and aesthetics. Our question is, which of the following definition of philosophy is most accurate? आई चारटा भितरु आमे देखिबा को डेफिनेशन टा मोस्ट एक्यूरेट होची. तो सबुठार बड़ एटा ही लिखा है, philosophy is the systematic study of fundamental questions about existence, knowledge and values. तो आर आंसर अब ऑप्शन नंबर सी. 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड फिलोसफी? तो सेठी आमे देखिले फिलोसफी होची गोटे ग्रीक वर्ड दीटा ग्रीक वर्ड आछि, गोटे होची फिलोस आ गोटे होची सोफोस. फिलोस रो माने होची लव और सोफोस रो माने होची विजडम. तो सेति पे फिलोसफी रो जो माने होची लव ऑफ विजडम. ऑप्शन बी रे अछि लव ऑफ विजडम. तो एटा हबो तार आंसर. 9 number question, which of the following definitions of philosophy emphasizes its critical and reflective nature? Option A, philosophy is the study of natural world. Option B, philosophy is the study of human behavior and society. Option C, philosophy is the critical and systematic study of fundamental questions about existence, knowledge and values. Option D, philosophy is the study of art and aesthetic. एथरे भी सेया पचार कि आ भितर को डेफिनेशन फिलोसफी रो को डेफिनेशन टा क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव नेचर ऊपर अधिक एम्फासाइज करे. तो आर आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी,
Philosophy is the critical and systematic study of fundamental questions about existence, knowledge, and values. ତାପରେ ଦେଖିବା 10 number question, who defined philosophy as the love of wisdom? The option ଅଛି Plato, Aristotle, Socrates, the ancient Greek philosopher Pythagoras. आर आंसर हम ऑप्शन नंबर सी सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस जे सीए ही कहिथिले फिलोसफी रो गोटे डेफिनेशन देथिले कि द लव ऑफ विजडम बोली। 11 number question, according to Plato, philosophy is option अछि the pursuit of knowledge and understanding, the study of human behavior and society, the love of wisdom and the pursuit of eternal truth, the study of the natural world। तो आम आगुरी भी देखिले जो खाली जदि लव ऑफ विजडम कथा आसो सेटा कहिथिले सॉक्रेटिस, किंतु द लव ऑफ विजडम एंड परस्यूट ऑफ इटर्नल ट्रूथ कथा जदि आसो तो सेटा प्लाटो कहिथिले। 12 number question, which of the following is Aristotle's definition of philosophy? Option अछि the study of human behavior and society, to pursuit of knowledge and understanding, the study of natural world and pursuit of wisdom, the love of wisdom and the pursuit of eternal truth। तो आर आंसर अब ऑप्शन नंबर सी द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड द परस्यूट ऑफ विजडम। नेचुरल वर्ल्ड आउ विजडम कथा कहिथिले एरिस्टोटल तांको डेफिनेशन रे। 13 number question देखिबा, according to Immanuel Kant, philosophy is option अछि the study of human behavior and society, the pursuit of knowledge and understanding, the critical examination of the nature of knowledge and reality, the love of wisdom and the pursuit of eternal truth। Our answer of option number C, the critical examination of the nature of knowledge and reality। तापर देखिबा 14 number question, which of the following is Jean Paul Sartre's definition of philosophy? Option अछि the study of human behavior and society, the pursuit of knowledge and understanding, the study of human condition and the pursuit of authenticity, the love of wisdom and the pursuit of eternal truth। Our answer of option number C, the study of human condition and the pursuit of authenticity। 15 number question, according to Martin Heidegger, philosophy is option अछि the study of human behavior and society, the pursuit of knowledge and understanding, the fundamental questioning of the nature of existence and being, the love of wisdom and the pursuit of eternal truth। Our answer of option number C, the fundamental questioning of the nature of existence and being। 16 number question, which branch of philosophy deals with the nature of reality including the relationship between mind and matter? आर ऑप्शन अछि एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, मेटाफिजिक्स और लॉजिक। आर आंसर अब ऑप्शन नंबर सी मेटाफिजिक्स जोटा सेटा डील करे का सहित ना नेचर ऑफ रियलिटी सहित। 17 number question, which branch of philosophy is concerned with the study of knowledge including the nature of truth and the limits of knowledge? आर ऑप्शन अछि मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स और एस्थेटिक्स। तो नॉलेज ऊपर के स्टडी करे ना एपिस्टेमोलॉजी। आम देखिला एठी मेटाफिजिक्स का ऊपर स्टडी करछे ना नेचर ऑफ रियलिटी ऊपर, तो एपिस्टेमोलॉजी स्टडी कला का ऊपर ना नॉलेज ऊपर। तापर देखिबा 18 नंबर क्वेश्चन, which branch of philosophy deals with the study of moral values and principle including questions of right and wrong? ऑप्शन अछि एथिक्स, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक। तो आंसर अब ऑप्शन नंबर ए एथिक्स। एथिक्स टा का ऊपर ना मोरल वैल्यू आउ प्रिंसिपल ऊपर स्टडी करे। तापर देखिबा 19 नंबर क्वेश्चन, which branch of philosophy is concerned with the study of beauty, taste and art? तो आर ऑप्शन अछि एस्थेटिक, एथिक्स, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी। आर आंसर अब ऑप्शन नंबर ए एस्थेटिक। एस्थेटिक जोटा सेटा होची स्टडी ऑफ ब्यूटी, टेस्ट आउ आर्ट। हमें देखिले कि एथिक्स का ऊपर स्टडी कला ना मोरल वैल्यूज और प्रिंसिपल ऊपर, मेटाफिजिक्स का ऊपर स्टडी कला ना नेचर ऑफ रियलिटी ऊपर, आउ एपिस्टेमोलॉजी का ऊपर ना नॉलेज ऊपर स्टडी करछि। 20 नंबर क्वेश्चन देखिबा, which branch of philosophy deals with the study of reasoning, argumentation and inference? ऑप्शन अछि लॉजिक, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स। तो आर आंसर अब ऑप्शन नंबर ए लॉजिक। लॉजिक टा जोटा सेटा रीजनिंग आ आर्गुमेंटेशन ऊपर स्टडी करे। तापर देखिबा 21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिलोसफी इन टर्म्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर? ऑप्शन अछि लिमिटेड टू स्पेसिफिक फील्ड्स लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स, encompasses all aspects of human experience and knowledge, restricted to the study of human behavior and society,
focuses primarily on the natural world. Our answer of option number B encompasses all aspects of human experience and knowledge. तापर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज विद इन द स्कोप ऑफ फिलोसफी ऑप्शन अच्छे द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू एम्पिरिकल मेथड्स ऑप्शन बी रे अच्छे द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी थ्रू scientific methods option C रे अच्छे द एग्जामिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एक्जिस्टेंस नॉलेज एंड वैल्यूज ऑप्शन डी रे अच्छे द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी the examination of fundamental questions about existence, knowledge and values. 23 number question what is the scope of philosophy in terms of its methodology? Option A रही limited to empirical observation and experimentation. Option B रही restricted to the use of logical and mathematical reasoning. Option C रही encompasses a wide range of methods including critical thinking, analysis and reflection. Option D रही focuses primarily on the use of authority and tradition. Our answer of option number C encompasses a wide range of methods including critical thinking, analysis and reflection. 24 number question which of the following is an example of a question that falls within the scope of philosophy? Option A रही what is the chemical composition of water? Option B रही how does the human brain process information? Option C रही what is the nature of reality and existence? Option D रही what is the best way to design a bridge? Our answer of option number C what is the nature of reality and existence. तापर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिलोसफी इन टर्म्स ऑफ इट्स रिलेवेंस टू एवरीडे लाइफ ऑप्शन ए रही लिमिटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल इश्यूज ऑप्शन बी रही रिलेवेंट ओनली टू स्पेशलाइज्ड फील्ड लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स ऑप्शन सी रही एनकम्पासेस ए वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल इश्यूज ऑप्शन डी रही फोकसेस प्राइमरली ऑन द नीड्स ऑफ प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स आर आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी encompasses a wide range of practical and theoretical issues. तापर 26 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन आर ऑप्शन ने अछि फिलोसफी प्रोवाइड्स द थियोरेटिकल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एजुकेशन प्रोवाइड्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर philosophical theories option C रही philosophy and education are interdependent and inform each other option D रही philosophy and education are separate and distinct fields our answer of option number C philosophy and education are interdependent and inform each other तापर देखिबा 27 नंबर क्वेश्चन हाउ डज philosophy influence education option A रही by providing a set of rigid rules and standards for teaching option B रही by encouraging critical thinking and reflection in students option C रही by promoting a specific ideology or agenda option D रही by dictating the curriculum and course content our answer of option number B by encouraging critical thinking and reflection in students तापर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द रोल ऑफ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इन एजुकेशन ऑप्शन अछि टू प्रोवाइड डेफिनेटिव आंसर्स टू क्वेश्चंस ऑप्शन बी रही टू एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्पेक्टिसिज्म ऑप्शन सी रही टू प्रमोट रोट मेमोराइजेशन एंड रिकॉल ऑप्शन डी रही टू फोस्टर डोगमेटिक थिंकिंग एंड adherence to authority our answer of option number B to encourage critical thinking and skepticism तापर 29 नंबर क्वेश्चन हाउ डज एजुकेशन इन्फॉर्म फिलोसॉफिकल इंक्वायरी आर ऑप्शन ने अछि बाय प्रोवाइडिंग एम्पिरिकल डाटा एंड एविडेंस फॉर फिलोसॉफिकल थ्योरीज ऑप्शन बी रही बाय चैलेंजिंग फिलोसॉफिकल अजम्पशंस एंड थ्योरीज ऑप्शन सी रही बाय प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर फिलोसॉफिकल डिबेट एंड डिस्कशन ऑप्शन डी रही ऑल ऑफ द एबव आर आंसर अब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव 30 number question what is the ultimate goal of interdependence between philosophy and education option A रही to produce well informed and critically thinking individuals option B रही to promote a specific ideology or agenda option C रही to provide a set of rigid rules and standards for teaching option D रही to foster dogmatic thinking and adherence to authority our answer of option number A to produce well informed and critically thinking individuals आज वीडियो रे एति क्वेश्चन डिस्कशन करिबा
नेक्स्ट वीडियो रे आमे देखिबा कोर 1 रो जो यूनिट 3 अछि तार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। जदि वीडियो भल लागुचे लाइक करंतु आ चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग।